Assalamualaikum dear students. We have started with the multiplication of expressions, that how to find the product of expressions or how to multiply the expressions. In that we have seen that the multiplication of monomial with monomial. Now today we will see that how to multiply monomial with different polynomials, means binomials, trinomials, likewise. So let's see how to multiply monomial with the polynomial. So let's take any monomial. Monomial means only one term, so this is one term. This we have to multiply with the any polynomial, means binomial, trinomial. Monomial we have already seen, so we will not see it now. Okay, so let's take any example of binomial. Let's say 3m plus 9. Now the question is I have to multiply them. So what will we do and what is the meaning of this? First of all, see, 2m, this is the first monomial, multiply by this one. So what will we do and what is the meaning of it? That this 2m will be multiplied with this whole bracket, यानी ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स के साथ वो मल्टीप्लाई होगा. So in bracket how many terms are there? 2 terms, first and second. So this 2m will be multiplied with both the terms. Okay, so 2m multiply by 3m. So constant will get multiplied with constant. So 2 3s are 6, and then if the variables are same, then the powers will get added, and if the variables are different, then no need to add their powers. Okay, so m they are same, and what is the power? 1 1. So m raised to 2, 1 plus 1 2, यानी 2m जो है वो 3m के साथ मल्टीप्लाई हो गया. Now next this sign will be as it is, और अब कौन सी टर्म है? 9. So now this 2m will be multiplied with 9. So 2 9s are 18, and this m will be as it is 18m. This is how you have to multiply the monomials with the binomials and trinomials. Let's take one another example. Suppose 3x multiply by 4x plus 3y plus 9. Now this is trinomial. So as I said, this 3x will be multiplied with the whole bracket. तो पूरे ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. सो फर्स्ट लेट्स मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म. सो 3 4s are 12, and x they are same. So x square, because 2 times it's there, इसका पावर 1 1 है. ओके, then plus sign. So plus sign will be as it is, then it's term of next term. So 3 3s are 9, x into y, so x y. Now here x and y, these are different variables, so simply we will put it as x y. Then plus sign, and then third term, that is 9. So constant with constants has 3 9s are 27x. There is no any variable. Is that clear? Then after further you have to simplify this, but if it is possible, if there are like terms, then you will simplify them, otherwise no need of that. यानी यहाँ पर ऐड करना है, सपोज यहाँ एडिशन की साइन है, तो यहाँ पर चेक करो कि आपके पास एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म है? नो. एक्स वाई की है? नो. एक्स की है? यस है. नो, उसकी भी नहीं है. So this is your answer. Now let's move to the exercise, and we will see the sums of exercise. So here we will see the first and second question of 9.3, and I have uploaded the
notes and exercise 9.1, PDF of notes and exercise 9.1, okay, in the WhatsApp group. 9.2 and 3 I'll give later on. Now let's see question 1 and 2 of 9.3. So what's that? Carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. Here they have given you expression, you have to carry out multiplication, means you have to multiply them. So let's begin with that. First is 4p multiplied by q plus r. So I told you that what's the meaning of this, that this term will be multiplied with this whole bracket, okay, यानी ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है सबके साथ वो मल्टीप्लाई होगा. So let's multiply with the first one, 4p multiply by q. Now is there any constant with q? No. So 4 will be as it is, means 4 ones are 4 and pq. Why? Because p and q are different variables, so their powers will not get added, okay. So 4pq, that's it. We have multiplied the first term. Now this plus sign we will put as it is, and then we will multiply with the next term, that is r. So 4p into r, hence 4pr. So this is our answer, 4pq plus 4pr. Understood? Let's move with the next one. ab into a minus b. You will put it in a bracket, okay. So let's multiply with the first term, ab into a. So यहाँ a जो है वो 2 times है, means the variables are same, so powers will get added. So a 2 times है, उसका मतलब क्या हुआ, a square b. b is only 1 time, so a square b. Is that clear? Then this minus sign will be as it is, and then we will multiply with the b. तो यहाँ b जो है वो 2 times है, तो वो क्या हो जाएगा, b square, and a will remain as it is. So ab square. Understood? Let's move with this one. See, this is also the same as the previous questions. If you are getting confused, then you can rearrange them in this way. यानी ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा मोनोमियल है, उसे पहले ले लो 7a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये जो है उसे यहाँ ले लो. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके. बट द कंडीशन इज़ ये जैसा है वैसा ही उसे रखना है, साइंस या कुछ भी चेंज नहीं करोगे, ओके. ये भी होगा, लेकिन इसमें अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है या आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ओके. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द होल ब्रैकेट. सो 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a, यानी ये ब्रैकेट में जो पहली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, मतलब 7 1s are 7 एज इट इज़. फिर a स्क्वायर और a दिस आर सेम. यहाँ a की पावर क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यानी a कितनी टाइम्स हो गया 3. सो a raised to 3 एंड दिस b स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज़, बिकॉज यहाँ a के साथ कोई b नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म, ओके. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन. अभी इसके पास तो सिर्फ a ही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 7a³ b स्क्वायर. देन आफ्टर व्हाट इज़ इन ब्रैकेट, प्लस साइन, सो प्लस साइन, और फिर ये जो है वो दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा b. सो 7a स्क्वायर b³. वाई? बिकॉज b एंड b आर सेम, सो 2 + 1 3. दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व, और ये इजी भी रहेगा आपको. Similar way, let's move with the next one, a square minus 9 into 4a. तो आप ये भी कर सकते हो, 4a को आगे रख दो और फिर मल्टीप्लाई करो तो भी इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, ओके. नाउ नेक्स्ट वन, they have given one expression and then multiply by 0. Now we know very well, if we will multiply any number by 0 or anything by 0, then our answer will be 0.
और यहाँ पर ये जो पूरा ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, hence your answer will be 0. Understood? Let's move with the next question of this exercise. So what you have to do in this, you have to complete this table. Here they have given the expressions, first one, second one, and here you have to write out the product. Product means what? Suppose if I multiply 9 and 10, 9 tens are 90, then 90 is the product of 9 and 10. So here you have to find out the product, means you have to multiply this both the expressions and you will write its answer over here. Understood the question? Okay, now let's begin with the first one. A को सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब A मल्टीप्लाई बाय दिस होल एक्सप्रेशन B प्लस C प्लस D. ओके, सो मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पहली टर्म कौन सी है? B. सो A मल्टीप्लाई बाय B, hence our first answer is AB because both are different variable, right? फिर क्या है B के बाद प्लस की साइन, सो प्लस की साइन एज इट इज. देन कौन है? C, सेकेंड टर्म इज C, सो A मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म AC. सिमिलर विथ प्लस A मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म AD. Understood? This is how you have to solve. This one you will try to solve by yourself. Come on, do it. I am giving you, let's say 30 seconds to solve this sum. अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप 5xy को पहले ले लो और फिर इसे ब्रैकेट में रखो और मल्टीप्लाई करो. You are having 30 seconds to solve the sum. Your time starts now. Come on, I am speaking the steps. पहले 5xy लिखो, multiply by this whole bracket. Done? Okay. Then after multiply 5xy with the first term. तो यहाँ first term क्या है? x. multiply करो और आंसर लिखो. Done? Okay. फिर second term क्या है? लेकिन उसके पहले ये प्लस की साइन मत भूलना. Okay. Done? Good. Now 5xy multiply by y. Done? Yes. Now minus sign, so 5x minus की साइन रखो. Then after 5xy multiply by 5. Done? Very well. So I hope you will get the answer. Now let's begin with this. P multiply by this whole expression. So first P multiply with the first term, that is 6p square. सो यहाँ P के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब 1. सो 6 1s are 6. फिर P and P, these are same variables, means they are like terms, like, so the powers will get added. So 2 plus 1 3p cube, right? Then 6p के 6p स्क्वायर के साथ तो मल्टीप्लाई हो गया, तो अब कौन सी साइन है? माइनस 7p. तो 7 1s are 7. p, so p square, फिर क्या है? प्लस साइन, and then p will multiply with 5, so 5p. It's easy na? Yes, good. Now let's begin with this one. This one again you will try to solve by yourself. So come on, start it. You are having 10 seconds to answer me. Okay? Your time starts now. 10 9 8 7 6 5 4 3. Time up. Did you get the correct answer? Okay, let's check the answer. 4p स्क्वायर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यानी ये पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ p स्क्वायर जो है वो सेम टर्म्स है, तो क्या होगा? 4
स्क्वायर स्क्वायर है मतलब 2 2 ऐड हो जाएगा, सो 4p रेज टू 4 एंड q स्क्वायर विल बी एज इट इज़। फिर p स्क्वायर के बाद क्या है माइनस, तो माइनस की साइन, और फिर दूसरी टर्म है 4p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, तो ये 4p स्क्वायर एज इट इज़ एंड देन q स्क्वायर मीन्स दे आर सेम, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, हैंस q रेज टू 4। सो दिस इज योर आंसर 4p रेज टू 4 इंटू q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू q रेज टू 4. Understood dear students? It's easy na? Now let's begin with the last one, a b c, a plus b plus c। तो आप क्या करोगे, a b c को पहले ले लो तो कन्फ्यूज़न ना हो, और फिर a plus b plus c। Can you give me answer in 10 seconds? No, 5 seconds. Can you? Your time starts now. 5. It's very easy, you can. 4, 3. Time up. What's the answer? C. It's very easy. ABC multiply by A. So A square BC, because A same है, so A square BC plus ये यहाँ पर B भी सेम है, तो A B स्क्वायर C यानी B 2 टाइम्स आ जाएगा, प्लस C 2 टाइम्स है लास्ट में, तो A B C स्क्वायर, एक फर्स्ट में A स्क्वायर आएगा, फिर B स्क्वायर और फिर C स्क्वायर। अंडरस्टूड? This is very easy. Once if you will do practice, then you will catch it very nicely. Okay? Now in next video we'll come with the next questions. Here are the answers. If you want to take a look, you can. Have a beautiful day ahead. Thank you.